everyone, welcome back to my channel. In today's JavaScript tutorial, we are going to learn about control statements which help us to control the flow of a program based on different conditions. We will cover three important concepts: the if else statement, the switch statement and the ternary operator. I'll explain its concept with simple examples so beginners can easily understand how decision making works in JavaScript. Let's get started. So JavaScript control statement is used to control the execution of a program based on a specific condition. कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा. इसमें हमारा पहला अप्रोच है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. The if else statement will perform some execution for a specific condition. If the condition meets, then a particular code of action will be executed. Otherwise, it will execute another code of action that satisfies a particular condition. This is the syntax for if else statement. If condition and the code which I want to execute, and then that one. So I'll give you example. Let age equals to 20. If age is greater than equal to 18, then so again and again I don't want to write node demo.js, so I'll just use node more demo. It will automatically update code. So here I'll explain. हमने एज की लिमिट यहाँ पे है लेट एज इक्वल्स टू 20. सो हमने यहाँ पे एज का वैल्यू लिया है 20 और कंडीशन डाला है कि जो एज है अगर वो 18 से बड़ा है तो ये कोड एग्जीक्यूट करते. अगर नहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है देन ये कोड एग्जीक्यूट करते. सो हमारा इस केस में एज जो है वो 18 से बड़ा है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसने ये कर दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. यू आर एलिजिबल फॉर वोट. अब जैसे हम यहाँ पे अगर 20 की जगह 2 लिखते हैं ना, you are not eligible for vote because this condition is not satisfying. Age is not greater than 18. यहाँ पे एज है वो 18 से बड़ा नहीं है, एज हमारा 2 है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसलिए ये कोड ना एग्जीक्यूट होके ये कोड एग्जीक्यूट हुआ. अगर सेटिस्फाई होता तो ये कोड एग्जीक्यूट होता, अगर नहीं हुआ देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा. ये था इफ एल्स. तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस जो बोला. सो द स्विच केस स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. इन सम केसेस यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट इज सीन टू बी मोर कन्वीनियंट देन इफ एल्स स्टेटमेंट. दिस इज माय सिंटेक्स. ओके, switch case 1 statement will break. If condition is satisfied then it will break, else we'll move to the next statement. So then next and at last default. If any of them is not satisfied then this will execute it. So here I'll give you example. Let a equals to 3.
can say because I have written node 1, so it is updating automatically. Save my time, I'll just copy paste this. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here. So now I'm going to explain my code. So here I have taken let day equals to 3, then I have used switch. My first case is case 1. If it is satisfied, then this will execute and then it will break. If not satisfied, then it will move to the next case and the next case. Here in this condition, in this program, my third case is satisfying. I have taken day equals to 3 and case 3. So this condition is satisfied, so this will execute. This code will execute. So console.log Wednesday, and then because condition is already satisfied, then it will break here. Else, suppose here. So in this example, case 1 is not satisfied, then it will continue. 2 is not satisfied, then continue. 3 not, 4 not, 5 not, 6 not, 7 not, and it will. My 7 cases are not satisfying, so then it will execute this by default. So here invalid day. So हमने यहाँ पे डे का वैल्यू लिया है, पहले लेते हैं 2. सो यहाँ पे हमने डे का वैल्यू लिया है 2. सो हमारा केस 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट हमारा केस 2 सेटिस्फाई हो गया. तो उसने रन किया, ये कोड एग्जीक्यूट किया एंड देन ब्रेक. और अगर हम यहाँ पे लेते हैं 9, सो इस केस में हमारा फर्स्ट केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिर 6, 7 नहीं हुआ. देन बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसे एग्जीक्यूट किया, इनवैलिड डे. सो ओके, नेक्स्ट इज ternary operator, conditional operator.
The conditional operator, also referred to as ternary operator, is a shortcut of expressing conditional statement in JavaScript. टर्नरी एक शॉर्टकट है इफ एल्स स्टेटमेंट का. जब हम सिंपल कंडीशन चेक करना और सिर्फ दो पॉसिबल आउटपुट हो तब हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं. ये सिंटेक्स है. कंडीशन ट्रू, इफ वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू फॉल्स. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू इज रन होगा, अगर एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो वैल्यू इफ फॉल्स. So here I'll explain with example. So here I have taken let num equals to 8. Result, and if num is completely divided by 2, 0 will be my remainder, then it is an odd number, else it is an then it will be even number, else it will be odd number. So as we already know, the number which is completely divided by 2, remainder should always be 0. So that will be my even number, else that will be my odd number. So here 8 is completely divided by 2, condition is satisfied, then it will print value this value because it is true, condition is true. So my result will be even number. If I have taken here suppose 89, so in this case condition is not satisfied because 89 is not completely divided by 2. So this will be my value for result, and then I'll print result. So यहाँ पे हम एक नंबर लेंगे 8, उसके बाद हम एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे जिसका में हम वेरिएबल लेंगे रिजल्ट नेम से, जिसमें हम एक कंडीशन डालेंगे कि जो मेरा नंबर है अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है देन वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है. तो हमारे 8 के केस में वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमारा रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा इवन नंबर, एंड देन उस रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे. अगर हम यहाँ पे 83 लेते हैं तो 83 कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है 2 से, तो वो हमारा ऑड नंबर होगा. तो अभी मेरा रिजल्ट का वैल्यू ऑड नंबर आ जाएगा, देन हम उसको प्रिंट कर देंगे तो वो यहाँ पे ऑड नंबर होगा. And then our fourth approach was using loop. As I have already discussed about loop, I am not going to again explain about loop. So I'll just tell you what is loop. Loops in JavaScript allow a block of code to run multiple times as long as a given condition is satisfied. They help reduce repetition and make programs more efficient and organized. So that's all for today's video. I hope you have a clear understanding of JavaScript control statements, including if-else, switch statement, and the ternary operator.
These concepts are essential for writing logical interactive programs. If you find this tutorial helpful, please like, share, subscribe to the channel for more JavaScript tutorials in both English and Hindi. Thank you for watching. That's all for today.